हेलो बच्चों, महेश्वरी सर एक बार फिर आपके सामने अगले वीडियो में हम 1 बाय 1 टॉपिक्स लेते चल रहे हैं। डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं इस समय, डिफरेंशिएशन। अब लगभग हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की तरफ बढ़ चुके हैं। वैसे तो इन योर एनसीईआरटी 12th क्लास ये रोलेस थ्योरम और लैग्रांजेस थ्योरम दैट इज द पार्ट ऑफ डेरिवेटिव, बट इन सम रिफ्रेशर बुक इट इज देयर इन द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर से शुरू करते हैं। एक तरह से एप्लीकेशन ही है डेरिवेटिव का ये। एनीवे, लास्ट वीडियो में हमने बताया था रोलेस थ्योरम के बारे में। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट अनदर थ्योरम दैट इज लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, also known as mean value theorem only, and a few questions related to Rolle's theorem as well as Lagrange's theorem। और वो क्वेश्चंस जो बोर्ड में आए हुए हैं, पहले हम बात करेंगे Lagrange's theorem की, उसके बाद में क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। Lagrange's mean value theorem, in short we write LMVT। Just like Rolle's theorem, suppose there is a function, real valued function in closed interval AB, such that first point is fx is continuous in closed interval AB। Same was the point with Rolle's theorem। Rolle's theorem में भी पहला पॉइंट यही होता था। दूसरा, fx is differentiable, सेम पॉइंट रोलेस थ्योरम में भी था। रोलेस थ्योरम में भी ये दोनों पॉइंट सेम थे कि फंक्शन कंटिन्यूअस और फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए था। रोलेस थ्योरम में एक बात और कही थी, fa इक्वल टू एफ बी, बट इन मीन वैल्यू थ्योरम fa इक्वल टू एफ बी नहीं दिया गया, मीन्स डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y may be there। अब देखिए, इसको हम ज्योमेट्रिकली देखते हैं कि ज्योमेट्रिकली अगर ये कंडीशन हो कि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, देन व्हाट कंडीशन मे बी देयर। दिस इज ए फंक्शन y इक्वल टू fx, point a and there is point b in the interval ab। corresponding to a, the value of y is f of a। corresponding to b, the value of y is suppose f of b। रोलेस थ्योरम में क्या होता था, ये fa और fb सेम थे, but here they are different। so this point is a fa and this is the point b fb। now if there is this situation in which fa and fb are not equal and the function is continuous and differentiable, then we observe that this is a chord। to this curve, this is a chord। और इस chord के पैरेलल हमेशा हमें एक टेंजेंट मिलेगी। Whenever such condition arises, we will get a tangent parallel to this chord and that will be at a point, which point is somewhere in between a and b। अच्छा, अब हम ये जानते हैं what is the slope of the tangent। slope of tangent is f dash c at the point x equal to c। so this is slope of tangent। now this tangent line is parallel to the chord, and what is the slope of the chord? slope of the chord is line joining two points, that is by 2 minus by 1 upon x2 minus x1 fb minus fa, and this point c is in the interval AB, somewhere in the interval AB। hence mean value theorem is verified। तो mean value theorem में जो कंक्लूजन है, वो कंक्लूजन ये निकला, ये बीच में तो मैंने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताया आपको। आप क्या लिखें कि fx is continuous, fx is differentiable, then there exists a point c such that f dash c equal to fb minus fa upon b minus a, and that c will belong to AB, open interval। whenever these two conditions are verified, function continuous हो और differentiable हो, तब एक पॉइंट आपको ऐसा जरूर मिलेगा c जो
इस A और B के बीच में होगा, उस पर टेंजेंट विल बी पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स। रोलेस थ्योरम में क्या होता था? रोलेस थ्योरम में एक तीसरा पॉइंट और था, FA इक्वल टू FB था, उसमें जो टेंजेंट आती थी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आती थी। ऑलराइट, नाउ वी विल डिस्कस टू प्रॉब्लम्स ऑफ रोलेस थ्योरम एंड टू प्रॉब्लम्स ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। अब आपको पता लग गया स्टेप्स क्या है, तो आप वीडियो पॉज करके यू कैन ट्राई योरसेल्फ दीज प्रॉब्लम्स, देन आफ्टर ट्राइंग यू कैन अगेन ऑन द वीडियो एंड कैन सी द सॉल्यूशन। देखो पहले मैं अभी मीन वैल्यू थ्योरम करता हूं क्वेश्चन, क्योंकि अभी मीन वैल्यू थ्योरम हमने समझा है। देखो यहाँ पर फंक्शन है fx इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर और इन द इंटरवल 0 1। 2x माइनस एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, बोल सकते हैं कुछ भी हम इसको ऐसे। सो fx इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, so continuous in closed interval 0 1. Also fx is differentiable। 2 minus 2x, यहाँ डेरिवेटिव फाइंड करने का हमारा पर्पस सिर्फ यही रहता है डायरेक्ट, जिससे हम ये देखें कि इस इंटरवल में कहीं पर कोई नॉट डिफाइंड या ऐसी सिचुएशन तो नहीं आ रही। ऐसी कोई सिचुएशन आती है फिर वो डिफरेंशिएबिलिटी का पूरा प्रॉपर प्रोसेस से चलेंगे, अदरवाइज ये सीधा दिखाई दे रहा है 0 to 1 ऑलवेज इट इज वेल डिफाइंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब fx इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0 1, देन f dash c equal to fb minus fa upon b minus a। f dash c is fb minus fa upon b minus a। What f dash c is? 2 minus 2c। f of 1 will be 2 minus 1, 2 minus 1। What is f of 0? 0 minus 0। So 2 minus 2c equal to 2 minus 1 is 1, 2c equal to 1, c equal to half, that belongs to 0 1। So mean value theorem is verified। तो जो भी फंक्शन हमको दिया हुआ एवरी फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन, तो हम वो उसको इस हिसाब से लिख सकते हैं। और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कौन से होते हैं, कौन सी कंडीशन होती है, वो सारा हम जानते हैं। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी जब पढ़ा है तब हमको पता है सारा। नेक्स्ट इज fx इक्वल टू tan inverse x in the interval 0 1। Again in the interval 0 to 1 this tan inverse x function is continuous, so tan inverse x is continuous in closed interval 0 1। Also f dash x is 1 upon 1 plus x square, so fx is well differentiable in open interval 0 1। Both the conditions of mean value theorem are satisfied, therefore f dash c will be fb minus fa upon b minus a। I am taking in a very simple way, और ये सिंपल प्रॉब्लम है, कोई बहुत टिपिकल प्रॉब्लम नहीं है। f dash c is 1 upon f1, that is tan inverse 1 minus tan inverse 0 upon 1, so 1 upon 1 plus c square equal to pi by 4, so 1 plus c square equal to 4 upon pi, c square equal to 4 upon pi minus 1, c equal to under root of 4 upon pi minus 1। Now this you can verify just for your satisfaction whether this value lies between this within this interval or not, otherwise the value is 100% lying, because two conditions of the mean value theorem are verified, so we can write c belongs to 0 1। Otherwise also you can check 4 upon 3.14, when you divide you get 1 point something, 1 point something minus 1 is 0 point something, that value square root of that number is lying within the interval 0 to
1. In the end we will write, so mean value theorem is verified. Now I will tell you two questions of Rolle's theorem. fx equal to log of x square plus 2 minus log 3. In the interval minus 1 1. देखो लॉगरिथमिक फंक्शन हम जानते हैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 पॉलिनोमियल फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो ये एक तरह से कॉम्पोजिट फंक्शन हुआ, composition of logarithmic function and a polynomial function. Composition of two continuous function is also continuous, that we will write in detail. Log x is a continuous function in its domain, that we can write when you are writing, when you are solving in the examination. X square plus 2 is a continuous function in their domain, which implies that log of x square plus 2 is a continuous function. Log 3 is a constant function which is continuous. Constant function is continuous. Therefore, overall fx is continuous in minus 1 1. Also, f dash x, that is 1 upon x square plus 2 into 2x. This is derivative of this. Log 3 derivative is 0. So fx is differentiable in open interval minus 1 1, that you can write fx is differentiable in open interval. And f of minus 1, f of minus 1 में क्या हो जाएगा, minus 1 का स्क्वायर हो गया 1, 1 plus 2 3, log 3 minus log 3. Also f of 1, f1 will be log 3 minus log 3, that is again 0. So f of minus 1 equal to f of 1. अब रोलेस थ्योरम की तीन कंडीशन थी, पहली बात कंटिन्यूअस, दूसरी बात डिफरेंशिएबल, तीसरी बात एफ ए इक्वल टू एफ बी. तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, इसका मतलब एफ डैश सी इक्वल टू 0. अब भाई एफ डैश सी क्या होगा, देखो एफ डैश एक्स ये है, तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा, 2c अपॉन सी स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू, which means 2c equal to 0, which means c equal to 0, or that belongs to, when all the three conditions of Rolle's theorem are satisfied, verified, then definitely there is a point at which the tangent is parallel to x-axis and that point is lying between the given interval. And at that point, since tangent is parallel to x-axis, मतलब f dash c equal to 0. वो तो एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, ज्योमेट्रिकली बोलने की बात है कि tangent is parallel to x-axis. अदरवाइज क्या लेते हैं हम, f dash c equal to 0. और f dash c equal to 0 का मतलब यही है कि tangent is parallel to x-axis. sin x upon e power x in the interval 0 pi. देखो यहाँ भी सेम उसी तरह से लिखेंगे, अब मैं पूरा वो डिटेल में लिख नहीं रहा हूँ, तुमको बता दूं बस खाली. fx is sin x upon e power x, quotient of two functions. sin x is a trigonometric function, continuous. e power x is continuous. तो इसका मतलब suppose hx is sin x, which is a continuous function, that you can write gx equal to e power x, exponential function is continuous. So fx is given in the form of hx upon gx, where gx cannot be 0. E power x is never 0. So hx is continuous, gx is continuous. It implies that fx is continuous in 0 pi. इस तरह से थोड़ा डिटेल में लिखना हमको ये कि सपोज hx is sin x कंटिन्यूअस है, e पावर x कंटिन्यूअस है, तो hx अपॉन gx ये कंटिन्यूअस है. जब कंटिन्यूटी पढ़ रहे थे तो हमने ये बात जानी थी कि दो कंटिन्यूअस फंक्शन हो f और g, तो f प्लस g, f माइनस g, f इंटू g, f अपॉन g when g is not equal to 0, f o g, g o f, all are continuous. And f dash x e power x into cos x minus sin x
x इंटू ई पावर एक्स अपॉन ई पावर एक्स स्क्वायर। लिख देंगे एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन 0 pi, also f0, so what sin 0 is 0, that is 0. What f pi is sin pi upon sin pi is 0, so we find that fa equal to fb also, then f dash c equal to 0. So f dash x is this, f dash c will be e power c into cos c minus sin c into e power c upon e power c square equal to 0. E power c can be taken as common, cos c minus sin c equal to 0. हमने लिया f dash c equal to 0, ये f dash c है, ठीक है। तो यहां से e पावर c, इसका मतलब cos c माइनस sin c इक्वल टू, और cos c माइनस sin c इक्वल टू 0 का मतलब हो गया sin c इक्वल टू cos c, sin upon cos equal to 1, that gives you c equal to pi by 4 and it belongs to 0 pi. Hence Rolle's theorem is verified. अब क्या होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसमें इन तीन में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई ना होती हो। जब वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही होगी, देन वी विल राइट Rolle's theorem is not applicable. सपोज फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है, सपोज फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, सपोज एफ ए इक्वल टू एफ बी नहीं है, तीन में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई ना होती हो, देन वी विल राइट दैट Rolle's theorem is not applicable. और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं कि Rolle's theorem is verified. Hence Rolle's theorem is verified जब ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं। तो जो एप्लीकेबल नहीं होने वाली जो सिचुएशन आएगी वो क्वेश्चन आपको मिलेगा 2 मार्क्स में, और इस तरह का ये क्वेश्चन है तो ये हमको क्वेश्चन मिलेगा 4 मार्क्स में बोर्ड में। तो ये Rolle's theorem और मीन वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड अपना टॉपिक था। अब इस समय हम टॉपिक की तरफ बढ़ चुके हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की तरफ। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो डोंट मिस द वीडियोस, फर्दर वीडियोस। और मिस नहीं करने के लिए पता है तुमको, बेल आइकन दबाना है, सब्सक्राइब करना है, यह है तो अच्छी बात है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।